Hello. Am I audible? Yes, sir, your voice is audible. Thank you. Sir will join within few minutes, okay? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, Dr. Satyajit. Good afternoon, participants of this program. Am I audible to you, everyone? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Farhan, So, please. so shall we start or we can wait for people to join? Farhan, please. Yes, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of the IT Mr. Fraternity, I would like to extend a warm and hearty welcome to our workshop on short-term training program on research methodology basics, organized by Birla Institute of Technology, off-campus Lalpur, Ranchi. It's a great pleasure to have amidst us our special guest, Dr. Rudra Rameshwar. Sir will be talking on the topic non-parametric test, correlation and regression. A special welcome to our director, Dr. Vandana Bhattacharjee ma'am, who has been kind enough to support our endeavor. A warm welcome to our esteemed faculty members and other guests and attendees present here. Our guest speaker, Dr. Rudra Rameswar, is specialized in the area of quantitative and qualitative research, data analytics, and entrepreneurship. Sir is designated as a professor at Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala and International Management Institute, New Delhi. Sir, your presence with us is refulgence and source of inspiration for the students present here. Now I request Sir to take forward the session. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Farhan. Thank you, participants. Thank you, the organizing institute. I'm sure we are almost at the end of this short-term training program on research methodology. So before going to the session, I would like to interact with some of the participants, like how was the journey for these last, because this is the last session. So I will try my best to, conclude this 5-day short-term training program on research methodology basics. Anyone in the class. And I request all of you to, unmute your camera because this black screen has obstacle to the two parties like you and me. Yes, guys, good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, so someone want to interact with me or linking to the yesterday session or today session? Yes, Amitabh ji. Yes, Amitabh sir, hello. Your voice is not coming. Please unmute. Hello, sir. Yeah, hello, sir. Good afternoon. You want to say something?
Sir, in research, when we are thinking about the variables, Mhm. so so about variables, which variable must be very much up to date for the research? How it can be recognized properly? There are Sir, number of yesterday, if you can recall, I do not know whether you have attended. yes, sir. Yesterday, even I can repeat to all the participants, Yes. all these keywords are variables actually. Oh, All these keywords are variables like performance. yes, sir. Performance is one variable, right? Yes, sir. Salary is one variable. Okay. Yes, yes, sir. Men and women are is also a variable. Yes, sir. Okay, Yes, research in itself a variable if it is in being asked. So yes, sir. all these keywords from the English literature point of view, Yes, sir. if you ask, these are variable because these variables are not fixed. The Yes, values are changing actually, yes, sir. Yes, isn't it? Your salary is possibly changing, your age is changing, yes, sir. Yes, sir. right? Performance is changing, Yes, declining, कम ज़्यादा होता है, yes, sir. Yes, sir. So pertaining to your question, Yes, sir. all these keywords are variables. Yes, sir. Yes. अब वो वेरिएबल हमें देखना है कि मेरे स्टडी में वो वेरिएबल क्या है. लाइक That is yesterday I was talking about dependent variable and independent variable. independent. Yes, sir. हाँ. Yes, So sir. sometime one independent variable could be the dependent variable for some context Yes, sir. Yes, because sir. it's a chain, sir. Actually, Oh, if you see, we are talking about the chain analysis yes, sir. where because we can't tap the entire universe. Yes, sir. We only touch and take some sample out of the Sample. Yes, sir. population, Yes, right? sir. Yes, sir. And we take the assumption that अगर ऐसा होगा या होता. Yes, sir. So that is the research is all about. Yes, sir. So in a general term, in research, nothing is correct and nothing is wrong. Yes, sir. It is a contextual, methodology which we call it as a research. Yes, sir. कोई भी research एक research paper में नहीं आ सकती, that we all know. Yes. Yes sir, I hope you understand. So Yes, yes. ये variables जो हैं, Yes, sir. ये keywords हैं जो Yes, sir. हम एक different context में या किसी बातचीत में या किसी दृष्टिकोण से perspective से उसको हम Yes, sir. देखते हैं. Yes. Is that okay with you, sir? Okay, okay. Thank you, sir. Any other queries, guys? Atul Kumar, Nivedita, Vaibhav, Arunima. Many people are there, but still they are not unmute. I do not know. But anyway, so thank you very much, guys. So let's start our discussion on the topic of non-parametric test, correlation, and regression. So I've shared the screen. Please confirm. And please be ready with your notepad because some of the things which maybe you know or you may know, if you know it as well. So I'm sure the screen is visible to everyone. Please, Sir, it is slightly no, it is okay. Now it is okay. it is okay? Yeah. Yes, Yeah, thank you. it is okay, sir. So guys, thank you very much. So I'm sure you all participants are happy that this is the last session of this 5 days short-term training program on research. And after the session, I hope you must be going for your valedictory session as per the schedule. So thank you very much once again. Thanks to the organizing institute. BIT Mesra Ranchi off campus, BIT Lalpur, and Director Madam Dr. Satrajit and his team who is kind enough to have this workshop. So guys, in the last day of Sttp is non-parametric test correlation and regression. And this is going to be a good session for you than before that I assume and I consider. So thank you once again for entire thing. So here you can see I have drawn one picture for you. So you can see as just before I was mentioning to Amitabh sir, like it is very difficult to go with this population, right? We all researchers have the binding and nobody has tapped. Maybe in future too, nobody will tap in future. Maybe any great researcher across the globe, right? Because simple is the only possibility, and we researchers are inclined towards this population where we choose the research, and research is the things are fragmented, different ideas are there. And today this circle is a very useful for me and for you in this session when we talk about the correlation, regression, different tests. So please be ready with your notepad. I'm going to share some of the test
which are non-parametric tests, which are parametric, what is the advantage, what is disadvantage, like this. So maybe this will help you to understand you and building your argument on your decision. So this is one chart which is in front of you, and this chart probably help you to distinguish the difference between parametric test and non-parametric test. And on the most left side of your screen, you will see comparison basis. So according to the definition, if you see, parametric test is one which you have the complete information about population. That circle, you remember the population parameter, like up to certain extent we always, because again it is in our hand to select the population, how much population you are targeting. But you can't go with the universe, you can't go with the people of entire globe population, right? So we understand. So again it is a matter of discussion how much population we can, but considerably if your population is on the higher side, definitely you will get the similar section of the sample for your study. If your population is very less and you are considering sample as a population, then probably you are not on the right track of your research, right? So population parameter, or that can make assumption about the parameters, like defining different properties are there of the population, like distribution from other samples which are drawn. So definition wise it is known as parametric test. But in non-parametric test, it is a one I should say a advantage, right? So a non-parametric test is one where the researcher has no knowledge about the population parameter. कोई आइडिया नहीं है आपको, कोई जानकारी नहीं है, नीदर ही कैन मेक स्पेसिफाइड assumption, कोई assumption भी नहीं ले रहे आप, या ले सकते हैं, but still it is required to test the hypothesis of the population. And that's why in during non-parametric test we consider hypothesis, इसलिए हम hypothesis बनाते हैं. Like we assume, okay, there is a significant relationship with it. Again, these days, format are changing. Abhi to hypothesis ko direct likhte hain, okay, this is this. Then we test. What is hypothesis? I will tell you. Many people, they have different definition, but I am sharing some definition of mine. It is an untestified assumption. Hypothesis can be defined as an untestified assumption having a relationship, because untestified means we have not tested yet. We are going to test, okay? So that's why it is known as untestified assumption, which we are going to test soon. And hypothesis having a relationship between IV and DV. Yes, please, anyone? Sir, please share your screen. It is not visible. I've already shared the screen. Okay, I think I was. Thank you for informing. I think it was confirmed. I do not know. Now it is okay? No, sir. It's only yours. Yes, now it's okay. Now it's okay. So did you see this? Did you Yes, see sir. this population chart and sample? Okay, Yes. very good. Very good. Thank you. Thanks for informing. Because it was shared, I do not know why. Because technology is also the problem. Sometimes. So I was mentioning this chart. You can take the picture also if you to do so. And you can see here I was mentioning this part definition and non-parametric, because आपको अंतर डिफरेंस मालूम होना चाहिए. पैरामेट्रिक में मेरे को क्या मिलेगा, मेरी सिचुएशन किस तरफ है, मेरा आइडिया रिसर्च का क्या है. काफी लोगों को मैंने देखा है बात करते हुए काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, दो दे आर द एक्सपर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, समटाइम दे डू द रिवर्स ऑफ द एनालिसिस. कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट्स उनके अपोजिट है, which is not been there. This is very important chart, sir. Yeah, Very this is very important. important chart. So that's why I'm Yes, sir. starting my discussion. क्योंकि जब तक आपको उसके फंडामेंटल नहीं पता होगा, आप लोग Yeah. टेस्ट वगैरह कर लोगे, सब That मशीन is- कर रही है that टेस्ट. is correct. मशीन को तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं पता. Yes, जैसे sir. ये कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे ही Yes, हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. Yes, बट sir. मुझे मेरी प्रॉब्लम पता हो, किस is कंडीशन में मैं पैरामेट्रिक टेस्ट करूंगा, किस Yes, sir. कंडीशन में मैं नॉन पैरामेट्रिक करूंगा, Yes, डेटा sir. मेरे पास कितना है, किस में मैं हाइपोथेसिस को लगाना Yes, है, sir. किस में हाइपोथेसिस को नहीं लगाना है. सो दैट्स व्हाई दिस चार्ट इज That is correct. ओके. Yes, sir. और डेफिनेशन के पॉइंट्स अगर आप देखेंगे जो किताबों में लिखी है लिटरेचर में, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है हमने. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शायद वो विजिबल नहीं था. एंड थैंक्स टू मैम फॉर इन्फॉर्मिंग मी. सो ए पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन विच हैज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट वहां किया जाता है जब आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी है. Yes, sir. ओके, जहां पर आप कुछ एजम्पशन भी ले लेते हैं, दैट कैन मेक एजम्पशन अबाउट सम पैरामीटर्स.
और वो Yes. पैरामीटर डिफाइन है। मान लीजिए आपको स्टडी कर रहे हैं, आपको 2-3 इंस्टीट्यूशन के बीच में स्टडी करना है, तो वहां पर सारी चीजें वेल सेट है। आपने देखा होगा वेल सेट मीन आपको डेटा पता है, आपको लोग पता है, उनकी परफॉर्मेंस पता है, आपको उनके मार्क्स पता है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन पता है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। तो Yes. उस केस में आपको कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। That is- एजम्पशन आप लेंगे पैरामीटर्स का उस Yes. कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू, और उसमें से कुछ आप पॉपुलेशन में से सैंपल ले लेंगे। मान लीजिए कि एक विश्वविद्यालय में, एक यूनिवर्सिटी में 1000 लोग काम करते हैं, Yes, या sir. तीनों विश्वविद्यालय में मान लीजिए 2500 लोग काम करते हैं। Yes, तो sir. 2500 का तो आप पूरा मतलब रिसर्च नहीं कर सकते। Yes, तो आप sir. उसमें से क्या करेंगे, कुछ 500 600 लोगों का आप एक पूल बना लेंगे, या उन लोगों का Sampling. करेंगे, सैंपलिंग कर लेंगे, Yes, सैंपल sir. ड्रॉ कर लेंगे, और Yes. उसके, क्योंकि वहां पर चीजें फिक्स्ड है। तो Yes. उस कंडीशन में हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। Yes. लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, जहां पर रिसर्चर को कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन में वो डायलेमा में रहते हैं। डायलेमा मींस दैट इज अ सिचुएशन वेयर नथिंग इज क्लियर, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। डायलेमा, कंफ्यूजन, डायलेमा इज कंफ्यूजन बेसिकली। Yes, sir. नीदर दे हैव द स्पेसिफिक एजम्पशन, उनको कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन भी नहीं मालूम है या नहीं बना सकते। Yes. नीदर दे कैन मेक, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। बट वो एक एजम्पशन ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। इसलिए हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाई हमें पता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक और बताता हूँ स्मार्टर वे, कि लोगों को पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में मालूम है, या उनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी मालूम है, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वो लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना के उसको चेक करते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको जानकारी पता है बट फिर भी आप हाइपोथेसिस बना लेते, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं, राइट। सो इट्स योर चॉइस। बट ये मैं यहाँ पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, काफी लोगों को दिक्कत आती है, सर मैं टेस्ट कौन सा लगाना है, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझूं। जैसे अभी अमिताभ सर की बात थी कि वो वेरिएबल नहीं समझ पा रहे, तो जो भी ये कीवर्ड है सब वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yeah. Yeah, sir. ओके, तो अब आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, जैसे कंपैरिजन बेसिस क्या है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीटली नोन है, जैसे हमने बात करी सारी इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है। बट पैरामेट्रिक में क्या है, मालूम नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस को हम डेटा से सपोर्ट करते हैं। डेटा हम लोग सेकेंडरी भी ले सकते हैं और नॉन सेकेंडरी भी ले सकते हैं, मीन्स प्राइमरी, राइट। प्राइमरी में क्या रहता है, आप डायरेक्ट मीन्स फ्रेश डेटा ले सकते हैं। सेकेंडरी मीन्स दोज डेटा which are recorded by some organization, maybe some Published data. हाँ, रिकॉर्डेड मीन्स पब्लिश्ड डेटा बेसिकली। Yes. बट उसमें भी क्या देखा जाता है कि वो डेटा आपके काम का है या नहीं। कितना हो सकता है 10% डेटा ही हो, तो हम लोग फिर देखते हैं कि 10% डेटा पर आप ज्यादा जजमेंट नहीं ले सकते। Then you are advisable, or your committee, your supervisor or the team will advise you कि भाई आप ये ना करके आप सीधा ऐसा करो, प्राइमरी रिसर्च कर लो। आपको कम से कम उसमें एक ऑथेंटिसिटी रहेगी, बिकॉज रिसर्च इज ऑल ऑल्सो अबाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डेटा, ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, राइट। इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। और एक और बेसिस है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, पी वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने देखा होगा, आपने काफी लिटरेचर में भी देखा होगा, टी स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो यूज ए नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हम कंडीशन मान लेते हैं कि नॉर्मल है, बट वहां पर देखेंगे नॉन पैरामेट्रिक सिचुएशन में वेयर द थिंग्स आर नॉट नॉट नोन, तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस वी नोन एज नॉन नॉर्मल और आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब इधर उधर है, कुछ पता नहीं है, फिक्स नहीं है, सही है कि गलत है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। मेजरमेंट लेवल अगर आप देखेंगे कंपैरिजन बेसिस, अप्लाइड व्हेन द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज मैट्रिक स्केल, इंटरवल एंड रेशियो। कल भी मैंने बात की थी कि काफी सारे लोग हैं जो अपने स्केल्स को मशीन में, मतलब सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, दे आर फेलिंग इट। कभी बहुत सारे लोग आते हैं, डाटा देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेंडमली उन्होंने इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वट एवर द वे। कभी कभी तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, और रेंडमली दे जस्ट सिलेक्ट द स्केल। तो मशीन एक ऐसी चीज है, वहां पर अगर आप कोई वैल्यू भी नहीं दोगे तो भी कुछ रिजल्ट आएगी। तो मेनी पीपल दे हैव द यू कैन से ए रॉन्ग मिसकंसेप्शन कि उनका डेटा सही है या रिजल्ट ठीक आ रही है। बट रिसर्च इज ऑल अबाउट द रास्ता, द पाथ, द करेक्ट वे टू डूइंग इट, isn't it? So that's why these sessions are really important. And in the case of non-parametric test, it is applied for nominal and ordinal scale. तो आप देखेंगे non-parametric test में generally हम लोग nominal and ordinal scale की बात करते हैं, और ये quite popular है।
इंटरवल स्केल ज़्यादातर नहीं देखा जाता है क्योंकि डेटा जनरली मोस्टली एज फार एज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा इज कंसिडर इंटरवल में ही मिलता है, राइट. सो वी जनरली गो फॉर द रेशियो. में आपको दिखा देता हूँ अगर इफ टाइम परमिट्स. लेट मी शो यू SPSS. लेट मी रन. ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 3 तरीके का स्केल अवेलेबल है. Yes, let me go with this one problem. ये डेटा है, कोई डेटा है आपके सामने. आपको स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है गाइस? ओके, थैंक यू. सो आप देखेंगे यहाँ पर ये डेटा है वेरिएबल व्यू. तो यहाँ पर देखिए मेजर है. तो जो मैं आपको बता रहा था कल भी, और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि इसके बाद आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पाएंगे. देयर इज नो स्टेज वेयर यू कैप्चर योर ओन मिस्टेक व्हाट यू हैव डन, राइट. सो this is the data. Here you can see, like you can see this is the like age range, vehicle, some problem it is in front of me. मैंने कुछ random problem लिया है डेमो के लिए. आप देखेंगे तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट टेबल है वेरिएबल व्यू. तो यहाँ पर आपके वेरिएबल के नाम आ गए, उनके टाइप आ गए बिकॉज द टाइप इज न्यूमेरिक. उसकी विड्थ आ गई. विड्थ मींस द विड्थ ऑफ दैट डेटा, कितने डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए. डेसिमल में 0 कर दिया. अगर आप 1 करेंगे या 2 करेंगे वो भी कर सकते हैं, तो वहां पर 0.01 ऐसा करके आ जाएगा. ये आपका लेबल है जिसको कंप्यूटर नहीं समझता. कंप्यूटर सिर्फ इसको समझता है, कंप्यूटर लेबल को नहीं समझता. तो लेबल इज फॉर यू, फॉर द रिसर्चर. ओके. और एज को आपको डिफाइन करना है, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया 1 इज दिस रेंज, 2 इज दिस रेंज, 3 इज दिस रेंज. तो रेंज मे बी लाइक 1 इज मेल, 2 इज फीमेल और 3 इज ट्रांसजेंडर सपोज. तो उसको आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, राइट. और मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है. कॉलम्स की विड्थ आप देख सकते हैं. अलाइनमेंट राइट रखना है, लेफ्ट रखना है. मैंने राइट रखा है. तो राइट मीन्स आपका अलाइनमेंट, जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल, सेंटर. मिडिल को हम सेंटर बोलते हैं. तो वैसे ही अलाइनमेंट है ऑफ योर डेटा. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है. सेकेंड लास्ट कॉलम ऑफ दिस वेरिएबल व्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल. यहाँ तीनों स्केल आते हैं, चौथा स्केल नहीं आता है. तो आपको जैसे मैंने बताया स्केल है, इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल है, नॉमिनल है. ये 3 स्केल पूछे जाते हैं. ठीक है. बाकी रोल कैसा है, इनपुट है. जनरली ज्यादातर हम लोग पार्टीशन भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं. देयर आर कमांड ऑल्सो. यहाँ पर आप देखेंगे ये लेट मी शो यू. यस, गो टू द डाटा. हियर यू कैन सी स्प्लिट फाइल. आप डेटा को यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, उनके केसेस को कर सकते हैं. तो ये काफी सारे फीचर है. जब मैंने ट्रेनिंग देता हूँ ये स्पेसेस में, काफी सारे ट्रेनिंग लिया है, तो लोगों को वो क्या करते हैं, अलग टेबल बनाते हैं सेपरेट करके. बट यहाँ पर एक फंक्शन है स्प्लिट फाइल. ये मुझे इसलिए याद आ गया कि यहाँ पर एक पार्टीशन स्प्लिट एक ऑप्शन है रोल मेरा. ठीक है. तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं. मे बी इन टाइम परमिट्स इन फ्यूचर वी विल डू सम एक्सरसाइज एंड ऑल. तो आप देखेंगे तो ये मैं बता रहा था कि ये मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ गो बैक टू द स्लाइड वेयर यू कैन सी. सो अप्लाइड फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो स्केल का कनेक्शन कहाँ पर है, मेरे मेजर से. क्या मैं मेजर कर रहा हूँ, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट लेवल. ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड. तो पैरामीट्रिक टेस्ट में वी आर मोर कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन मीन, और यहाँ पर हम लोग मीडियन की बात करते हैं. एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेरिएबल्स को देखते हैं. यहाँ पर हम क्या वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स को भी देखते हैं. वेरिएबल के साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, उनको भी देखा जाता है. इसलिए ज्यादातर लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं है, नो नॉलेज. जैसे लिखा भी है, वेयर द रिसर्चर हैज नो नॉलेज. सो लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नॉन पैरामेट्रिक दैट पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट. तो अब आपको शायद बेसिस पता लग गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है. मे बी सम ऑफ आवर रिसोर्स पर्सन कलीग हैव गिवन द पैरामेट्रिक टेस्ट. सो आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द कनेक्शन पार्ट. ओके. कोरिलेशन टेस्ट इसमें पियर्सन करते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया पियर्सन, कार्ल पियर्सन टेस्ट है, और एक है स्पीयरमैन टेस्ट. तो आप देखेंगे वहां पर, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका डिस्पर्जन है, मीडियन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ये सारे स्क्विसेस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. ये सेंट्रल टेंडेंसी इसकी बात कर रहा था मैं. मीन, मीडियन, मोड, सम आप सब निकाल सकते हो, वो भी आप देख सकते हो. तो इट्स वेरी इजी, मे बी ऑन एनी डेटा, राइट.
और एक और ऑप्शन आपको बता देते हैं, descriptives. Descriptive mein, if you go to the option here, you can see this is also mean, sum, medium and all. So this is very easy, but machine will never help you to understand what is going to be help you, right? यहाँ पर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल, ऑर्डिनल, काई स्क्वायर, कोरिलेशंस भी आप निकाल सकते हैं, क्रॉस Yeah, टेस्ट, yeah, yeah. kappa Very and good. all, right? So all these options are there. Yes, sir. Yes, It's very easy for everyone to use. yes, sir. Very easy. अब यहाँ पर देखेंगे कोरिलेशन निकालना है, आज का टॉपिक भी आपका कोरिलेशन एंड रिलेशन। तो Yes, यहाँ पर देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पियर्सन. So Pearson and Spearman. Pearson you go when you are considering the parametric test. But wherever you have the no knowledge and non-parametric you are talking about, then you select the Spearman. Is that okay with you? आप दोनों भी निकाल सकते हैं, but as the expert and people says that Spearman is meant for the non-parametric. तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप तीनों भी निकाल सकते हैं. Kendall's tau b भी है, तो इनके रिजल्ट आपको मोरलेस सिमिलर मिलेंगे. देर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट और देर इज नॉट टू मच डिफरेंट. और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली बाय डिफॉल्ट यू विल गेट द 2 टेल, बट 1 टेल में कर सकते हैं, बट जनरली और मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज कंसर्न अबाउट द 2 टेल टेस्ट, राइट? तो ये आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. जैसे मैं आपको इस डेटा सेट का ही बना के दिखा देता हूँ. कोरिलेशन बाइवेरिएट, मैं दोनों को भी निकाल सकता हूँ. आप वेरिएबल्स ले लीजिए, सपोज व्हीकल, एवरेज एंड ऑल दिस, नॉट दिस. इन तीनों में मुझे वेरिएबल्स में देखना है कनेक्शन, व्हाट इज द कोरिलेशन बाय 3 वेरिएबल. बाकी हम सबका भी देख सकते हैं. गो टू द ऑप्शन, सिलेक्ट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अदरवाइज जरूरत है तो आप लीजिए, नहीं है तो नॉट नेसेसरी. देन प्रेस कंटिन्यू. then bootstrapping is not required, then press OK. Then probably you will get Spearman correlation and Kendall's correlation. ठीक है, और ये ऊपर आपका आएगा, ये आपको कोरिलेशन आएगा आपका. विच कोरिलेशन? दिस इज द 3 व्हीकल, एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लेम, व्हीकल एज एंड व्हीकल ग्रुप, उनका कोरिलेशन आ गया है. ये नॉन पैरामीट्रिक, देखिए इन्होंने अपने आप सेपरेट कर दिया, नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन. इज दैट ओके विद यू? तो Kendall's tau एंड Spearman का रिजल्ट इज मच बेटर. और अगर आप डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स आर क्वाइट 1 इफ यू सी एज फार एज द कोरिलेशन इज कंसर्न विद दैट. तो आप देखेंगे यहाँ पर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट. यहाँ पर देखिए मैं आपको और थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ. थोड़ा व्यू, आई थिंक, लेट मी सी द व्यू. आई थिंक व्यू इज नॉट ओपनिंग. तो यहाँ पर देखेंगे 2 स्टार्स हैं. 2 स्टार्स में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल डिफरेंस इन 2 टेल्ड कैटेगरी. तो स्पेसमैन आ गया, देखिए यहाँ पर वो नहीं आया, कोरिलेशन नॉन पैरामीट्रिक है, ये कोरिलेशन इज ए पैरामीट्रिक डायरेक्टली. ओके, सो दैट इज द वे. और अगर मेरे को इसको चेंज करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम डेमो, देन वी विल डिस्कस इट. कोरिलेट, बाइवेरिएट, देन आई विल ओनली टॉक अबाउट द पियर्सन, देन प्रेस ओके. तो पियर्सन आप देखेंगे यहाँ पर पियर्सन नहीं लिखा है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम पीपल कंफ्यूज, सर ये क्या वैल्यू आ गई है. आई हैव नो आइडिया बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज नॉट. तो कोरिलेशन जहां पर बेसिक कोरिलेशन आता है बाय डिफॉल्ट इट इज ए पियर्सन कोरिलेशन. इज दैट ओके विद यू गाइस? और जब आप स्पेसमैन और कंडाल्स टाउ बी सिलेक्ट करते हैं, देन यू विल गेट द नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन वेयर एवरीथिंग इज रिटन हियर. सो तो जो डिफॉल्ट को कंपनी ने, IBM कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है, सो एवरी सॉफ्टवेयर हैव देयर ओन यू नो presentation for there, so the result is easy. Now you can interpret this result based on this, right? तो देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू बड़ी पॉजिटिव आई हैं. अगर एवरेज कॉस्ट का देखेंगे 0.384 विच इज वीक बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बट ये एक वैल्यू आई है व्हीकल एज के कंपैरिजन में -0.539 नेगेटिव रिलेशन. तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन विद द व्हीकल ग्रुप. तो कोरिलेशन का मतलब उनमें आपस में संबंध कैसा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा. आई विल शेयर some details with you in this. So I'm sure this chart is clear with some sort of demonstration कि कब क्या आएगा, कैसे आएगा, हम मीडिया निकाल रहे हैं. बाकी सॉफ्टवेयर इज रेडी, यू कैन गेट ऑल द रिजल्ट्स simultaneously. और इट इज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी विच आई वुड लाइक टू ऐड टू ऑल द स्कॉलर कि आप कोशिश कीजिए कि सारा रिजल्ट एक बार ले लें. वो क्यों? बिकॉज maybe some error will come, maybe some option you may tick select or not select or unselected by chance. कभी कभी by
आपकी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपसे कोई गलती से कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो चला गया, तो आप उस डेटा सेट को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप सारा डेटा वहां से ले लीजिए, बाई पिक एंड चूज, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड फाइल या वट एवर द लेटेक्स यू आर यूजिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू आर यूजिंग, वट एवर यू आर यूजिंग, यू कैन जस्ट save those images and pictures, and then once these results are with you, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एनालिसिस करना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर दोज पीपल दोज हु हैव नो इन डेप्थ नॉलेज कि क्या मशीन के पीछे चल रहा है, व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द स्क्रीन, जो एल्गोरिथम कैसे काम कर रहे हैं, आपने वेरिएबल्स को किस तरह से अलाइन किया है। So that's why I'm emphasizing on this aspect. So if you are doing, if you are expert, if you have no, or maybe it is a repetition for you, maybe you know better than me what I'm explaining. So I appreciate that. Okay, but it is meant for, this discussion is meant for those people who are not habitual about to get their problem को बहुत erratically देखते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते, and these days most of the scholars they are working on these tests actually. तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो टेस्ट को ज्यादा ना करें, रेदर डीप रूट में जाएं, उसको समझें उस वेरिएबल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें आप अपना डायलॉग कैसे करेंगे, कैसे मतलब सारा मॉडल आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज द आइडिया, और वो सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। So let's proceed, guys. So this is the another chart for you to understand when it is appropriate. It will help you because our agenda of today's talk is non-parametric test. So the number one is distributional assumption not met. जहाँ पर distribution assumptions नहीं meet करते, वहाँ पर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। जहां पर रैंक डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आप वहां पर भी, जहां पर रैंक नहीं है बराबर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन बराबर से नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मली कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ है समटाइम आउटलायर वाला डेटा है। कल भी मैंने बात की थी कि मेनी डेटा विच इज कमिंग, मान लीजिए आप प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं या सेकेंडरी भी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम डेटा की ज्यादा बात करते हैं कि डेटा किस शेप में, बाकी तो ये सब मशीन विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट, जस्ट इट्स ए क्लिक ऑफ माउस, इजंट इट? In a fraction of second you will get the entire analysis of whatever the data and variables. But fixing the variable, connection with the data, which test is required, what is recommended, what kind of result you are expecting, that is really essential, for which you need to practice. But वो practice भी आप कर लेते हैं, but still the problem is there, still the people are not publishing well, because शुरू में तो उनका इंटरेस्ट देखा गया, मैंने इस पर भी काफी लोगों का रिसर्च किया, रिसर्च स्कॉलर में को शुरू के 1-2 साल में जब वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो दैट टाइम दे आर वेस्टिंग हियर एंड देयर एंड दे आर नॉट कमिंग। बट थर्ड ईयर से प्रेशर बनना शुरू होता है, देन दे गो हियर देयर एंड देन गो टू द एक्सपर्ट, सर प्लीज आप मुझे टेस्ट बता दीजिए, विच टेस्ट आई माई मीटिंग इज शेड्यूल्ड लाइक दिस। सो दे आर नॉट मीन्स ready to accept these challenges. But if you are a very good and you want to be established in a good research, then I will appeal to all of you that please connect, reconnect, revisit your problem, means research problem, not your own problem or the problem with your job. कुछ 1-2 घंटे जरूर दीजिए, आप अच्छा कर पाएंगे। So parametric test requires stronger skill than rank, ठीक है? तो वहां पर पैरामेट्रिक में आप रिलेशनशिप को देखते हैं, एंड पैरामेट्रिक टेस्ट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्गर स्केल देन रैंक, तो वहां पर स्केल का एम्फेसिस है, यहाँ पर रैंक का। सो रैंक डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन यू इट इज एडवाइजेबल टू यूज एनपी टेस्ट, नॉन पैरामीटर। थर्ड पॉइंट इज नॉट कंसर्न विद पैरामीटर्स, जहां पर आपका कोई कनेक्शन पैरामीटर के साथ नहीं है, यू आर नॉट देयर फॉर द पैरामीटर्स। जैसे एग्जाम्पल है सैंपल रैंडम, is the sample from the population is a normal distribution. तो अगेन हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा जो डेटा है, दैट इज कंप्लीटली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए आपने 600 वैल्यूज का 600 वैल्यूज का कोई आप स्टडी कर रहे हैं, सो सपोज यू गेट बाई चांस यू गेट 590, सो माई 590 वैल्यू इज नियरेस्ट टू द 600 and my all the values are filled and the data is, we can say that it is normally distributed, the data is public. But आपका मान लीजिए डेटा ही बहुत कम है, maybe you are left with 49 values or 44 values out of 600, then if you are applying, or some people go hit and trial, so those things are not really advisable for you to give you the correct result for your research. This chart will also help you
to understand independent variable levels, right? So level of ordinal and interval, as I've already shared with you, right? Level of measurement of the nominal. Ordinal में जाएंगे तो देखिए मान वाटनी है टेस्ट, आप ये नोट करना चाहें कर लीजिए. इफ दिस चार्ट या पिक्चर लेना चाहें पिक्चर ले लीजिए. एक्सप्लोरिंग डिफरेंस बिटवीन ईच कंडीशन, ईच लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हर लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आप मेजर कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ मेजरमेंट अगर आपका ऑर्डिनल या इंटरवल है, देन यू आर एडवाइजेबल गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लाइक इंडिपेंडेंट मेजर्स आप निकालेंगे. तो उस केस में आपको यूज करना होगा मान वाइटनी यू टेस्ट. अगर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिपीटेड मेजर की बात करें, बार बार आ रहे हैं आपको मेजर करना, देन विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इज रिकमेंडेड. अभी मेरा प्रेजेंटेशन भी है इन सब में, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होगी भी. और लेवल ऑफ मेजरमेंट अगर नॉमिनल है, देन यू आर डायरेक्टली गो टू द काई स्क्वायर टेस्ट. और रिपीटेड मेजर में है, देन यू गो टू द बाइनॉमिनल साइन टेस्ट. बीएसटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, काफी लोगों ने यूज भी किया होगा बीएसटी. इसको सीएस बोलते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट. काई साइन इज अ ग्रीक लेटर बेसिकली, तो वहां से ये इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट एंड एसोसिएशन या कोरिलेशन निकालने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्शन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट. और एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन को वेरिएबल्स के साथ देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा तो स्पेसमैन रो रिलेशन, कोरिलेशन, बिकॉज ये भी बताता है. तो काई स्क्वायर टेस्ट एसोसिएशन भी बताते हैं. एसोसिएशन का दूसरा मीनिंग है कोरिलेशन, राइट. सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो माइन वाटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, इसको WSRT भी बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए. WSRT कहीं देखा होगा अपने रिसर्च पेपर में, कहीं कहीं लोग एब्रिविएशन नहीं यूज करते या यूज करते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज WSRT. WSRT is nothing but a Wilcoxon signed rank test. MWUT यूज करते हैं, then Mann Whitney U test. So these test abbreviation you should also know. chi-square test CHS means chi का CH ले लेते हैं, square का S ले लेते हैं, CHS. तो ये काफी सारे एब्रीविएशन भी मैं बता रहा हूँ, so that आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, करने में इंटरेस्ट आए. रिसर्च इज अ वेरी गुड एरिया, आई एम रियली एंजॉयिंग. इवन ये प्रेजेंटेशन भी मैंने कुछ 1-2 घंटे पहले ही आप लोगों के लिए बना रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई पार्टिसिपेंट एज मच एज इंफॉर्मेशन विद द क्लैरिटी एंड क्वालिटी, राइट. सो दिस चार्ट विल ऑल्सो हेल्प यू. अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप इसको भी पसंद कर सकते हैं. तो क्योंकि हम मीडियंस चेक कर रहे हैं, ये तो आपने समझ लिया. पैरामीट्रिक टेस्ट में मीन सिलेक्ट करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में वी आर कंसर्न विद द मीडियन. सो यहाँ पर मीडियन है, सो दैट्स व्हाई टेस्ट फॉर मीडियंस. सो दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. अगर आपका वन सैंपल फैक्टर है तो आपके लिए वन सैंपल विल्कोक्सन और वन सैंपल साइन टेस्ट इज रिकमेंडेड. 2 सैंपल है माइन वाटनी यू टेस्ट इज रिकमेंडेड. इफ योर सैंपल्स आर ग्रेटर देन 2 सैंपल, देन गो फॉर द 2 कंडीशन. इसके बाद 2 कंडीशन आती हैं. आउटलायर को लेके चल रहे हैं, आउटलायर को नहीं लेके चल रहे हैं. आउटलायर को लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आपने समझ लिया है कि कुछ आउटलायर हो सकते हैं कुछ परसेंट, देन गो फॉर द मूड्स मीडियन टेस्ट, MMT. इसको आप नोट कर लीजिए. मैंने काफी सारे पेपर रिव्यू करता हूँ, ये टेस्ट मुझे नहीं मिलते, ये टेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आउटलायर जो नेगेटिव चीज. आज आपको एक और ट्रिक बताता हूँ. इफ यू वांट टू पब्लिश मोर गुड पेपर्स, you always go and select the negative tests. जहां पर नेगेटिविटी आ रही है आप उसको टेस्ट कीजिए. you are increasing the chance of paper. मतलब जिस चीज को लोग नहीं कर रहे उस चीज को आप कीजिए. so it is the other way around, maybe the negative test. so negativity generally with the outlier. काफी लोग आउटलायर को नहीं लेते because people believe that, कल भी मैंने आपको बताया था, outlier are those values which are not under the scope of my research. But if you assume those outliers in your data and want to perform non-parametric, certainly because you are calculating the median, then under those circumstances MMT is recommended. If you assume no outlier नहीं है तो KWT क्रूसाल वालिस टेस्ट is recommended for the. So ये थोड़े फ्लो चार्ट आपको मदद करेंगे डिसीजन लेने में. एक चार्ट और आपको दे रहा हूँ मैं पैरामीट्रिक टेस्ट का. मैं साथ में दोनों को इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे. तो आप इसका भी पिक्चर ले सकते हैं. यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं मीन का. ये तो हमने जान ही लिया अपनी हमारी पहली स्लाइड से. 1 फैक्टर है, 1 सैंपल है, तो सैंपल इज लेस देन 30 है तो 1 सैंपल T टेस्ट करेंगे. इफ सैंपल इज ग्रेटर देन 30, Z टेस्ट रिकमेंडेड. और अगर 2 से ज्यादा है, जैसे कल हमने अनोवा की बात की थी, तो वहां पर आप अनोवा 1 वे अनोवा टेस्ट करेंगे. अगर आपके 2 सैंपल ही हैं डायरेक्टली,
डायरेक्ट है, मतलब ना कम है ना ज्यादा है, डायरेक्ट है, then go for the two choices. One is the independent data, another is the paired data. If you are dealing with the independent data, two sample t test is recommended. जहां पर variance आप देखेंगे, कल भी मैंने analysis of variance variability की बात की थी. So if variance is unequal, use unpooled standard deviation, go for two sample t test. राइट और अगर आपके पेयर डेटा की बात करें, गो फॉर द पेयर्ड टी टेस्ट, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है पेयर डेटा मींस पेयर्ड टी टेस्ट. So these are the three situations for parametric test. But in non-parametric test, you are only concerned with median. कभी कभी हम लोग एग्जाम में भी पूछ लेते हैं चेक करने के लिए कि लाइक रिसर्चर हाउ मच रिसर्च. सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कंसर्न विद द मीडियन, ये जरूर बात याद रखिए, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द मीन्स. ओके, let's move further with the non-parametric test. So these are the conditions, guys. Make no assumption about the data characteristics. If you use any three properties, तो आप वो देख सकते which are true. तो the data are normally not distributed, skewed है, थोड़ा सा skewed है means the curve तो negative skewed. Then this is a positive skew. Positive skewed means the notch is on the upper side towards the left, but towards the right side it is known as negatively skewed, means आपका कर्व झुका हुआ है, that झुकना is skewed. Okay, and the fourth one is the second one is the data show inhomogeneity of the variance, and the data are measured on a ordinal scale. Ranks की बात करते हैं, because यहाँ पर मेरे को ranks ज़्यादा ज़रूरत है, तो non parametric tests are recommended. This chart will also help you to understand the hypothesis as I was discussing, right? So non-parametric hypothesis testing works the same way as a parametric test. Evaluate the p-value. Only इसमें आप p-value देख लीजिए in the similar way, then you will get, because the procedure is same to calculate from the machine, from the software. So a non-parametric test makes no assumption about normality. तो नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कोई assumptions नहीं लेते. इसमें हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. लाइक सो अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक टू डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी भी मैंने आपको बता दिया with the help of SPSS like mean, median, mode and all. So these are the central tendency measures, is the median rather than the mean. So if just one distribution is required, then not normal, a non-parametric test should be recommended or used. If just one distribution is not normal, अगर वो normal नहीं है जो distribution है, तो उस केस में आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही रिकमेंड किया जाता है. तो further details, as we have already discussed, sometimes we do not meet any assumption such as assumption of normality. We can try to address such problems like transforming variable. फिर हम कुछ variable को change कर देते हैं. Sometimes we change the concept, or sometimes we go in depth of that discussion. डिस्कशन मीन्स आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम के डिस्कशन में हम और डेप्थ में जाते हैं, कुछ और वेरिएबल्स को देखते हैं, वी सर्च आउट. सो बट समटाइम इट माइट जस्ट बी बेस्ट नॉट टू मेक एन बिग एजम्पशन इन द फर्स्ट प्लेस. तो पहली बार आपको एडवाइस किया जाता है नॉट टू टेक एनी बिग एजम्पशन, मीन्स बहुत ऐसा एजम्पशन मत ले लीजिए विच इज हार्ड टू फुलफिल, ओके, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. Also, non-parametric tests are useful when our key outcome variable is ordinal variable than the interval or ratio variable, right? So this is, I think I've already covered this point. Non-parametric test and assumption-free test. इसको दूसरा नाम और है local language में assumption-free test. कल को पूछ लेते हैं, कोई भी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. Non-parametric tests are assumption-free test tends to be much less restrictive. तो ये कोई ज़्यादा restrictive नहीं है. People are still using it and getting, because everything has the connection with no knowledge, data is not normally distributed like this, and we are concerned with the ranks like this. So non-parametric test is. तो ये भी एक मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शीट. सो नेम ऑफ टेस्ट, आप किस कंडीशन में करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, तो ये चार्ट का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यू कैन टेक द सम स्नैप. सो मैन MWU मान वर्टनी यू टेस्ट. So test is for difference in the median of two unrelated dependent sample. यहाँ पर number of sample groups must be 2 and substitute for t test. Wilcoxon, difference in the median of the two related sample paired sample t test dealing with the same number of sample is 2 and substitute for the pair test. Krusal-Wallis test, KWT test. Krusal-Wallis test, difference in the median of more than two unrelated
जो जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट सैंपल्स. सो इन दिस केस वी गो फॉर द higher number, a higher order of the sample, that is 3 or more, and substitution for the one-way ANOVA. Yesterday we discussed about one-way ANOVA. Spearman rank correlation, Spearman rank, then correlation between the two variables recorded from the same sampling unit. उसी कैटेगरी से आप दो लोगों के बीच में निकालना है, वहां पर एक सैंपल का आप ले सकते हैं या एक ग्रुप ले सकते हैं. एंड पियर्सन कोरिलेशन का सब्सटीट्यूशन स्पियर्समैन है. वन वे का क्रूसाल वाले टेस्ट है, पेयर टेस्ट का विल्कॉक्सन है, टी टेस्ट का मैनवर्टनियो टेस्ट है. तो आप ये जो आपके राइट साइड में जो टेस्ट देख रहे हैं, दीज आर पैरामेट्रिक टेस्ट, और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन इज ऑन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सब्सटीट्यूट फॉर, उसका सब्सटीट्यूशन है, उसका रिप्लेसमेंट है. तो टी टेस्ट में मानवर्टनियो टेस्ट, पेयर टेस्ट में विल्कॉक्सन, वन वे एनोवा में केडब्ल्यू टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन में स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, और केंडाल-स्टाउ वो लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, केंडाल-स्टाउ बी टेस्ट. सो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट. सो नॉट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं. Let's understand about the definition of non-parametric test, as it is known as distribution free test. ये बता दिया मैंने. Are the methods of testing hypothesis when the nature of the distribution are unknown. And some of the non-parametric tests are like sign test, Wilcoxon rank sum test, KWT test, Friedman test. Friedman test is also there, and rank correlation. So these are very much important. आप कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप, बट KW टेस्ट के वैल्यूज ज्यादा अच्छी बताई गई हैं, ऐसा रिसर्चर मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे जब आप करेंगे. तो इसके रिजल्ट बेहतर है, हाईली रिकमेंडेड है, ज्यादातर लोग पूरे दुनिया में इसको यूज कर रहे हैं, and that is the research culture we are considering. Okay, with exceptions are always there. Right? Sign test, let's take the example of sign test. What is the sign test? Is probably the simplest of the non-parametric. This test is used for paired data. जब आपका data paired है तब आप लेते हैं, steps इसके लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा. I will share the copy of the presentation if it is needed. Otherwise you may find great presentation than this. तो आपको इससे भी अच्छे प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, बट आई जस्ट थॉट टू गिव यू, बिकॉज आई ऑलवेज डिजाइन द माय प्रेजेंटेशन related to the theme of the events and the participants requirements, right? So that is, so steps is evaluate the difference between each pair data, take the sign, positive ले ले, negative ले लीजिए, calculate the number of positive signs, उनको calculate कर लीजिए, take the larger number, किसका ज्यादा है किसका कम है, according to this. मैंने कुछ examples भी दिए just to understand, for your better understanding. And if calculated number, like maybe the large numbers which is greater than the critical number in the table, then the difference between the two mean is surely a significant value. ये जैसे कुछ डाटा है आपके सामने, देखिए टाइम टू पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कुछ एग्जांपल लिया है ट्रेंडर. सब्जेक्ट्स है आपके, ये ड्रग ए और ड्रग बी है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ड्रग ए और ड्रग बी का, ये पॉजिटिव आ गया. तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, देन जीरो, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक दिस, राइट. तो डिफरेंस बना दे, फिर इनको रैंक कर देंगे. रैंक तो आपको पता ही है, वी गो विद द रैंक कि किसका रैंक क्या है. अब जिसकी वैल्यू सिमिलर है उसकी रैंक वही है 7.5 सपोज, देन डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो रैंक भी बढ़ गया. अगर रैंक थोड़ा कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया, तो रैंक भी कम हो गया. और अगर जीरो है तो कोई रैंक नहीं, मतलब जीरो को कोई रैंक नहीं मिलेगा, ना तो 1 मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज देयर. 1.5 आ गया, थोड़ा सा बढ़ के है 1.25 से तो 10.5 हो गया. सो रैंक इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन ए डेटा सेट, राइट. सो रैंक विल बी डिसाइड दैट वे. So this is the data set where you can understand. I think if you are well versed, this will give you rank. And non-parametric tests are based on rank, right? Rank से relation है उसका, right? So evaluation में हम क्या देखेंगे, number of positive sign कितने थे इसमें, 9. नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने थे, 2. और काउंट कर लेते हैं, नेगेटिव देखिए 2 है, बाकी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. टोटल 1 एब्सेंट है ना, 1 तो एब्सेंट है मीन्स 0 है, तो 9 तो आपके पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, -0.25 और -0.5, राइट. सो इन दिस वे, सो डिफरेंस कितना आ गया, 1. न्यू सैंपल साइज इज 11. तो मेरे लिए 11 क्यों हुआ, क्योंकि एक तो चला गया, 9 10 11, तो दोनों के साइन को ऐड कर दीजिए, तो मेरा न्यू सैंपल साइज क्या आ गया, 11. आउट ऑफ कितना, पहले कितना था, 12 था. देखिए नंबर ऑफ सैंपल साइज सब्जेक्ट कितने थे, 12 थे, बट मैंने एक डिफरेंस लगाया और उससे मेजर कर लिया. क्रिटिकल वैल्यू भी मैंने देख ली, 10 फॉर 5% लेवल, 11 फॉर 1% लेवल, ठीक है ना.
नंबर ऑफ कंक्लूजन क्या है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बराबर ही है, राइट. सो इन दिस वे we can evaluation means the response, the result, you can say that for that particular chart. Now come to the WSRT. WSRT is dealing with the difference taken into consideration, and the difference, ये important point है, आप थोड़ा देख लिया. Second point, the differences are then ranked in order to magnitude and disregarding the sign. इसमें sign की ज्यादा महत्वता नहीं है, आप उसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसकी उसकी रेंज देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं. डिफरेंसेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर गिवन एवरेज रैंक. जब आपका कोई डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड का, देन दे कंसर्न विद द दिस रैंक. The sign corresponding to the sign of original differences are reassigned to the rank. Ranks of the same signs are summed. Summed means together, put together and added. Take the smaller sum compared to the critical value. कोई भी आप टेबल से देख सकते हैं, जैसे बोल्टन टेबल भी दिया है. टेबल वैल्यू मीन्स द टेबल वैल्यू, ओके. बट इन सॉफ्टवेयर टेबल वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, आपको डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ओके. So in that way, if you're doing manually, you can also do that. So if the smaller rank sum is less than the critical value, then the main difference is there. अगर sum rank कम है critical value से, तो आप मानेंगे कि difference significant है. अगर difference ज़्यादा नहीं है, smaller नहीं है, ज़्यादा है, जैसे पहले केस में हमने देखा था, इस केस में तो no significant difference, right? क्योंकि 10 जो values थी for 5% level पर थी, मीन्स उसी तरफ थी, और 11 के केस में 11 फॉर 1% लेवल. सो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 और 11 में, सो नो सिग्निफिकेंट. अगर कुछ डिफरेंस होता तो हम बताते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, ओके. सो फॉर लार्ज सैंपल हम लोग क्या करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड द एल्गोरिथम. ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, that's why I brought all these things. So for large sample, normal approximation is available to compare to population mean using the WSRT. तो Z value हम calculate करते हैं, R is the rank minus N is the total number of the observation in the particular data set. ये उसका formula है, divided by 12. 12 is the total number of the values in that particular thing, right? फिर हमने Weasley calculate कर लिया, हमने देखेंगे 2.Z value is 2.31. So these values are calculated by the software. You need not to calculate, okay? Yesterday also I have emphasized that don't go with the manual, because you never know where you have done the mistake, and you can't be measured, or it cannot be caught by you or by someone to that mistake is there, because you are dealing with the numbers, right? So corresponds to the tail area. Tail area जो हमारे जो normal distribution का था, उसमें हम tail area की बात कर रहे हैं. Area of 0.01 or P is 0.02 for the two side test. So right in this way we assume. Now WRST, Wilcoxon rank sum test, data are ranked in order of magnitude. ये हमने समझ लिया. Now we are concluding actually. So rank of each groups are summed. Moderate sample size, the statistical test for equality of the distribution means may be approximate. जहाँ पर हम लोग concern क्या है, अगर कोई भी आपसे पूछता है, if someone asks you about the WSRT, your calculation is based on the Z value. Right, and this approximation works well if the smaller sample size is equal to the greater than 10 as far as the table value is concerned, right? ये आप Z निकालेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए किस तरह से लिखना है. So suppose Z is T is the sum of the ranks of the smaller sample size, N1 is the smaller sample size, N2 is the larger. N2 higher side का sample size है, N2 smaller का. So if Z is greater than or equal to 1.96, then the two treatment of that particular situation, A B जो हमारी conditions थी as per the table value, said to be the significantly differences 5% level. Two-sided test is required and recommended. So in this way we take the assumption of my test. ये कुछ एक और example है, आप लोग देख लीजिए. Have a look. Original apparatus, modified apparatus. Original में ये values हमारा amount है और rank है. रैंक के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ Z हमने कर लिया, Z हमने निकाल लिया 1.63, देन वी कैन से दैट हाउ मच इज द Z वैल्यू, वेदर इट इज लेस देन द टेल एरिया. टेल एरिया मींस द जो ग्राफिकल हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका हम साइड देखेंगे, राइट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंड वी कैन कंक्लूड. इसीलिए रिसर्च में ये एक तरीका है, दिस इज अ प्रोसीजर एक्चुअली, बट नाउ वी आर नॉट एडवाइजिंग टू गो विद द मैनुअल.
go with the software will give you, then you interpret like this, okay, this is the value at this 1% significance level or 5% significance level. 5% आप significance level ले रहे हैं तो confidence interval आपका 95% होगा, right? Because 100% is the complete set, which is not possible, right? In general, otherwise there is no point to do the research. There is always a gap. Friedman test talks about the इनका पूरा नाम था मिल्टन फ्राइड. He was the US economist who developed this particular test, and this test is named on the gentleman Milton Friedman. So similar to the parametric repeated measure like ANOVA का replacement है in case of non-parametric test, right? So it is used to detect the difference in the treatment across multiple test attempts. So the procedure involves ranking each row. इसमें हम लोग ranks देखते हैं हर row में, right? Or maybe कुछ block में देख लेते हैं. Then considering these values of the ranks and column applicable to a complete block design, and it is thus a special case of the Durbin test. ये एक special case है Durbin Watson test, आपने नाम सुना होगा, Durbin Watson test. So that is the non-parametric test as far as the Friedman test is concerned. Friedman test is used for two-way and repeated measures analysis of variance by ranks. Analysis of variance means ANOVA, right? So in its use of rank, it is similar to the Krusal-Wallis one-way ANOVA of the variance by. तो इस केस में हम लोग Krusal-Wallis test ही recommend करते हैं as far as to use the ranks of that. So Friedman test से ज़्यादा अच्छे result आते हैं Krusal-Wallis test के as far as one way is concerned. अगर आप two way को repeated measure कर रहे हैं तो Friedman test is recommended. Okay, so that is according to the table, right? ये कुछ example मैंने लिया which I am not discussing, कैसे calculate करते हैं, otherwise you feel bored about this mathematics like what's a ratio. But I'm just showing you that all these things or algorithms of those softwares are defined in this way. कि जैसे आप instruction देते हो आप software को, वैसे instruction से आप value. But you should some familiar about these aspects of test statistics. Test statistics में SST upon SSE, right? Total sum of square error upon total sum of square errors. So that is the statistics में core भी पढ़ाता हूँ अपने MBA students को, आप लोग पढ़ाते हैं. But whenever these softwares are there, so our student, even practitioners, they are not very much interested about the statistics, right? They always go with the apply. Even मैं भी बहुत emphasis करता हूँ आप apply करो. Just forget about who has calculated, who made this, what is the use. आप use कीजिए, apply कीजिए in your research and make out of things. So that is a part of your representation, right? So finally, when n or k is large, ये कुछ normal distribution है, ये कुछ नियम कानून है, means regulations, कब लेना है, कब कैसे लेना है, probability distribution कब आएगा, chi-square कब आएगा. So all these things you should know, but suppose you are not accustomed with these kind of methods, then I am not, again, I'm nowhere, I have no authority to guide you that you should go and remember all these things. But you should know some familiarization, I believe, as a researcher, कि हमें कुछ पता होना चाहिए. When I was doing PhD, no one taught all these things, So, but now most of the things once are clear because in last 15-20 years I'm in this training. So I know where I have done the mistake, during my PhD. Though I've done my PhD in IIT, they were good professors. I've learned so many things. But still now I realizing today, if you ask me, so many things I could do, at that point in time. But because of my less knowledge, no training program, less training program there, because in IITs, in our department, there were very few scholars. So, but anyway, the life is like that. Life is always learning for these aspects. So this is, I think, it's a sort of repetition. So I'll share with you. You can just go through what condition, because small things can change your decision, right? Where is the rank 3? When is it? But you remember that chart which I've shared with you initially, right? So that is really important for this. Again, it is the same thing. I'm not there. Otherwise, you feel bored, right? I think similarly, p-value, this is really important. P-value is a probabilistic value which is approximated by some probability distribution, chi-square.
distribution is required in this case, p-value, and if table value of chi-square probability distribution is available, then go for the critical value of chi-square. Chi-square is denoted by this x sign square. This is the chi-square. If you see the cursor of my mouse, then you can see this, right? Anyway. Appropriate multiple comparison would then be performed on the group media. तो मल्टीपल कंपैरिजन आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं which test is important according to the table, then you analyze, because research is all about not go in very shrewd way. Research is all about learning slowly method difference. एंजॉय कीजिए अपनी रिसर्च को, उसको बार बार देखिए, अपने वेरिएबल्स पे काम कीजिए. हो सकता है आप जिन वेरिएबल को ले रहे हैं वो वेरिएबल ज्यादा फंक्शनल ना हो. And don't come under the trap of your any guide or anybody. It is your baby, you nurture. It is your responsibility. I believe that way. Okay. बाकी बहुत सारे बुक्स है, एक अच्छा बुक मैं बता दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा. You will get all these concepts there. So ये एक चार्ट और है आपके लिए. Now I'm summarizing this non-parametric test part. Number of factors है, which I like this. So this chart. तो जब आपके फैक्टर 1 है, वैसे ही मैंने बता दिया, इट इज द सेम, बट यहाँ पर कुछ और टेस्ट हैं. दैट्स व्हाई आई एम ब्रॉट दिस चार्ट. विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट, माइन वाटनी MWU टेस्ट, राइट. ट्रूसाल वालेस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. अगर आपका यस है मल्टीपल कंपैरिजन मींस यू आर श्योर, देन गो फॉर द डुन्स टेस्ट. ये आप लिख लीजिए, डुन्स टेस्ट. और अगर आपका मल्टीपल कंपैरिजन इज एब्सेंट और नो, then you can go for the Fisher's LSD. Okay, so in this way you can go for non-parametric test to use. So advantages क्या है, फायदे क्या है non-parametric test के, let's understand. Used with all scale, हर स्केल के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. Easier to compute करने के लिए, इसलिए ज्यादातर काम अगर आप देखेंगे तो वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हो रहा है. कि आप ब्लाइंडली आप ये दिमाग मत लगाइए कि क्या टेस्ट है, कोई नॉलेज है नहीं है. और यू कैन से इट इज द ऑफिशियल वे टू द रिसर्चर टू गो एंड टॉक अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट. डेवलप्ड ओरिजिनली बिफोर वाइड कंप्यूटर यूज. मेक फ्यूजर एजम्पशन, ज्यादा एजम्पशन नहीं लेते आप, कुछ हाइपोथेसिस ले लेते हैं, हाइपोथेसिस से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स को कनेक्ट कर लेते हैं, हाइपोथेसिस से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कनेक्टेड होते हैं. Then you go and make your questionnaire, then you invite the responses, फिर pilot testing, reliability, validity, वो सब आप करते ही हैं questionnaire के लिए. फिर then once the questionnaire is done and your data is received, then you are free to go and use these non-parametric tests with the help of machine, any machine. Maybe machine I always use because machine is software and softwares are many. So I'm not there. If I'll use one or two software, then probably people misinterpret that ki sir is in the promotion phase, So I have changed my argument. I changed my word. So that's why I always say this computing machine. Where you are you can go with any like Edinco, Minitab, SAS, various softwares are there. SPSS is one of them, quite popular and user friendly, and another is another software is like eViews. For economics people they can go for, but these tests are there. You can use, so different softwares are there. You are free to choose, but again, every software has their own limitation. R software is there. R tool is free software, right? Free, or you can say open source, right? So that is there. So need in this case, another advantage is need not involve population parameters. Result may be exact as parameter procedures are there. Result अगर आप दोनों का लगा के देखेंगे, more or less आपके पास. तो ये रास्ता आसान है. This path is quite easier. I'm sure you are with me. Though it is a very difficult time after lunch, or it is a lunch time. Let me see, 3:10 is the time right now. Okay, so result may be exact as parameter procedures are there, but you should know, and these are some advantages. This is also again some information, but again I think I've already commented in a different way.
distribution free tests, an ordinal variable or a rank. You can go definite outliers, and outcome is clear limits of the detection. So I think we have covered this part, so not need. This is another assumption. Assumptions अगर आप कुछ ले रहे हैं non-parametric statistics के लिए, so fewer assumptions are working upon. You can take the conclusion based on that, and some powerful tests like Mann-Watney test and Wilcoxon test, U-test, all these are very useful for this. ये एक और आपके सामने चार्ट है Z टेस्ट के कंपैरिजन में, पैरामीट्रिक के Z टेस्ट कब करते हैं, तो ये चार्ट भी आपको हेल्प कर सकता है. आपकी सिचुएशन कैसी है, रिसर्च सिचुएशन, अगर आप वन सैंपल में डील कर रहे हैं तो दिस इज गो फॉर द विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट. इसमें साइंड टेस्ट आएगा. तो अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैंपल्स ले रहे हैं तो सम रैंक टेस्ट आएगा विल्कॉक्सन का. 2 पेयर्ड सैंपल ले रहे हैं विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट आएगा. और 1 सैंपल 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ले रहे हैं, मतलब 3 ले रहे हैं, तो कोरिलेशन स्पियर्समैन कोरिलेशन आएगा और इसमें आपका पियर्सन आएगा. तो ये भी एक याद करने का तरीका है, बिकॉज द पर्पस दैट मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें, नॉट फॉर टुडे बट मे बी आफ्टर फिनिशिंग योर पीएचडी और इवन यू आर गाइडिंग योर पीएचडी स्कॉलर्स लाइक दिस. कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू लिमिट्स. ये आप नोट कर लीजिए, या sorry I forgot to mention limits. Limits means with respect to the p value. Okay, so that's why in that sense this chart is important. Suppose example is like this: glucose in blood. Maybe in research, कोई भी research कर रहा है, maybe somebody is doing on research, and the crux, this is the crux, example is the crux, glucose in blood. So parametric test is t test for 1 sample where p is greater than 0.05. But non-parametric test में आप Wilcoxon signed rank test use करेंगे. I think we have already known where p is greater than 0.2. तो ये conditions कुछ advice किए रिसर्चर्स ने, टॉप रिसर्चर्स ने, और those people who have developed these algorithms, right? जिन्होंने इन algorithms में काम किया. नहीं तो ये 0.25 भी हो सकता था, right? और 0.195 भी हो सकता था, right? But it is 0.2 like this. तो ये थोड़ा लिमिट्स से रिलेशन में है. तो ये चार्ट उस तरह से कंपैरिजन चार्ट है, यू कैन से मेथड्स का तुलनात्मक चार्ट है ये, जिसमें आप तुलना कर सकते हैं विच वन और किस लिमिट में आपको यूज करना है. ये आई थिंक मेरा सेकंड और लास्ट स्लाइड है फॉर द नॉन पैरामीट्रिक. कैन यू यूज विदाउट पैरामीट्रिक assumption? Then go for the non-parametric. Your job is, ये final conclusion आपके लिए है, this is for you guys, understand what each is used for and in what situation. So situation आपको पता होनी चाहिए. Randomly blindly आप jump करेंगे तो समझने वाला अगर समझदार होगा, means your guide, maybe your examiner or your reviewer or your editor, तो आप पकड़े जाएंगे, आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा, योर वर्क विल बी रिजेक्टेड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गाइड विद दिस. लेट मी, सो I'm sure it is clear to you what I'm trying to say. Situation is very much important. I always encourage the scholars, researchers, my colleagues also, situation को देखिए, कितनी गहरी ये situation है, how deeper this situation is. Then you understand, and these tests have no value. आप broader sense में इनकी कोई value है, these are all number games, you know. But this is the right way to represent my conclusion, right? So that's why that is also another way to research. Let's talk about the new topic, correlation regression. Correlation is a statistical method used to determine whether a linear relationship between the variable exists. क्या मेरे दो वेरिएबल जो मैंने लिए थे, क्या उनके बीच में कोई संबंध है? संबंध मीन्स द कोरिलेशन कितना है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मालूम है कि नहीं है, इसलिए कोरिलेशन है. रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच टेल्स मी अबाउट द नेचर, क्या है उसका, कैसी उसकी अवस्था कैसी है, उस संबंध की अवस्था मीन क्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या बिल्कुल नहीं है, वो मुझे बताता है, राइट? तो रिग्रेशन, तो उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं. रिग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्राफ्स बनाते हैं, ए स्ट्रेट लाइन गोइंग टूवर्ड्स, सो दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. मैं कुछ आपको बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंट की मदद से बता देता हूँ आपको, शायद कुछ आइडिया लग जाएगा. यस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
Yes, now you can here you can see. Let me which color you like this. I will choose. तो this is the another suppose this is the और ये मेरा लाइन है तो ये पॉजिटिव है देखिए गाइस दिस इज पॉजिटिव ओके दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और ये आपका रिलेशनशिप है दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप तो ये रिग्रेशन लाइन है नेगेटिव और एक रिलेशनशिप है वेयर नो एग्जिस्ट मतलब एक वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है एक वेरिएबल नहीं बाकी आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया दिस वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस राइट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज ग्राफ्स तो ये आपको याद रखना है तो ये रिग्रेशन के लिए गाइस दिस इज फॉर रिग्रेशन REG ओके तो उसका नेचर कैसा है तो काफी लोगों में भ्रांति है मेनी पीपल दे आर कंफ्यूज्ड और इन डायलेमा सर ये कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या अंतर है कोरिलेशन ओनली टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट है या नहीं है ओके बट रिग्रेशन विल टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ दैट रिलेशनशिप कैसा है कितना कर्वी लीनियर तो नहीं है जैसे देखिए मैं आपको एक और इमेज बना के बताता हूँ सपोज कोई ऐसा तो नहीं है राइट दिस इज रिलेशनशिप कोई ऐसा तो नहीं है लाइक दिस ओके तो कोई ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने कुछ डॉट डॉट बना रहा हूँ कुछ देखिए डॉट डॉट बना रहा हूँ ये स्कैटर्ड प्लॉट है बट एक ऐसा ग्राफ है दिस लाइक माई डॉट डॉट्स लाइक थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ maybe it is easier for you yes now you can see suppose this is my data and एनालिसिस के बाद तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे जो डेटा है विच आई एम डूइंग तो दिस इज जस्ट शोइंग द वन स्ट्रेट लाइन यस और नो बट यहाँ पर कोई लाइन नहीं है यहाँ पर कोई लाइन नहीं है कोई डेटा पॉइंट को अगर मैं इधर मिलाऊंगा इधर ऐसे करूंगा लाइक दिस सो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ओके सो लेट मी अनडू दिस तो दिस इज ए स्कैटर प्लॉट तो ये पॉइंट्स आपके सारे scattered scatter plot SC is short form is SC scatter plot okay but this is a linear plot आप देखेंगे linear because my points are going very fine you know I always enjoy you know when I like this drawing and all it's very easy you know so इसकी हम चर्चा करेंगे with another 15 to 20 minutes I think then rest I will turn with this okay so अब आपको समझ में आएगा नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स की दो वेरिएबल्स में कैसा अंतर है उनका नेचर कैसा है लीनियर है नॉन लीनियर है तो वो नॉन लीनियर चार्ट था जो अभी बताया लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव इज आल्सो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस राइट सो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स व्हेन वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द वन इन सम वे स्कैटर प्लॉट इज ए ग्राफ इन विच द पेयर्ड XYZ सिंपल डाटा आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ जैसे अभी मैंने आपको बताया स्कैटर प्लॉट डिफरेंट वैल्यूज हियर एंड देयर दैट इज नोन एज डॉटेड वाला जो प्लॉट है ना दैट इज स्कैटर प्लॉट ओके so the linear correlation so इसमें तीन कंडीशन होती हैं guys r is the measure linear correlation coefficient को हम r से दिखाते हैं small r measures the strength of the linear relationship it ranges from -1 to 1 इनकी रेंज होती है इनका जो अवस्था है उनकी रेंज है जो -1 से 1 की तरफ होती है also called the Pearson correlation coefficient right तो इस केस में हम लोग पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को ध्यान में देते हैं बिकॉज r को ही पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला गया है ओके r इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन देखिए परफेक्ट है परफेक्ट मींस ना कम ना ज्यादा जो चाहिए वो है पॉजिटिव है r इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट नो कोरिलेशन अगर r एब्सेंट है तो वो क्या बताता है कोई संबंध नहीं है कोई कोरिलेशन है ही नहीं और r अगर माइनस है रिप्रेजेंट द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जो मैंने नीचे अपना बताया था सो आई होप यू अंडरस्टैंड सो दैट इज नोन एज कोरिलेशन कोरिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है एक वेरिएबल चेंज हो जाए दूसरा चेंज नहीं हो रहा दूसरा चेंज हो रहा है फर्स्ट नहीं चेंज हो रहा सो लाइक दिस सो तो द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज टर्म्ड एज कोरिलेशन तो जो डिग्री है उसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री कितना है सीवियरिटी इंटेंसिटी डिग्री इंटेंसिटी कुड बी राइट इन ए सिमिलर टर्म सो कोरिलेशन इज कंसर्न अबाउट द स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ को ही हम लोगों ने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में बोला है डिग्री
Okay, guys, so don't confuse. Degree is nothing but the intensity. Because I'm an engineer, so we generally go with the strength of material. इसकी strength कितनी है? इसके material तो है, but इसकी strength कितनी है? इसकी tensile strength कितनी है, right? तो I hope you understand. तो उसको हम लोग stats में क्या बोलते हैं? Degree of association. Higher the degree, higher the correlation. So strength of the association between the two variables. So I'm sure it is clear to you. What is regression? In correlation, we observe degree of association, but no causal or functional relationship. But in regression analysis, we distinguish an independent from a dependent variable. बट रिग्रेशन एनालिसिस में हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट में किस तरीके का रिलेशन है. सो मैनी फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशन थे, जैसे बाई वेरिएट मैंने आपको कल भी बताया था. मल्टी वेरिएट एनालिसिस में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो बाई वेरिएट अपने आप में उसमें आ जाता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद मोर देन 2 वेरिएबल्स, राइट. मल्टी वेरिएट इज देयर, लीनियर इज देयर, नॉन लीनियर इज देयर. नॉन लीनियर मींस कर्वी लीनियर, थोड़ा सा कर्व, लाइन का कर्व आता है, उसको कर्वी लीनियर बोलते हैं. काफी लोगों को नहीं पता, तो उसको हम प्योर भाषा में मैथमेटिक्स में नॉन लीनियर बोलते हैं. मतलब लीनियर नहीं है, सीधा नहीं है, लाइन नहीं है, नॉन है. नॉन को मीन्स अपोजिट ऑफ द लीनियर, राइट. सो दैट इज द, बट अनदर मीन्स कर्वी लीनियर, कर्व बना रहा है, तो उसको नाम दिया है मैथमेटिकली कर्वी लीनियर, राइट. सो ये एक चार्ट है, आप इसको लेना चाहें तो आप देख लीजिए. डिफरेंट कोरिलेशनशिप विल टेल यू द रिलेशनशिप, बट रिग्रेशन विल टेल यू द अफेक्ट द अदर. वन अफेक्ट्स द अदर. कैसे इफेक्ट कर रहा है x on y. आपने देखा होगा regression is a line, but how the x is affecting or impacting the y, how the y is impacted by x, ऐसा भी बोल देते हैं लोग. many people say like this. Correlation is variable move together. इसमें दोनों वेरिएबल साथ में चलते हैं कोरिलेशन में. रिग्रेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल आपने सुना होगा, कॉजल रिसर्च टाइप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर ऐसा है तब ऐसा हुआ है. दोनों देशों में बीच में बात चल रही थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, तब लड़ाई हुई है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइक 2 countries are at war even today also, like Ukraine and Russia. So if somebody is interested, I'm just taking the example, not I'm anything targeting, but for your understanding, cause and effect है, because the 2 countries dialogues was not at one page, so that is the cause. पेज नहीं थे इसलिए वो cause है. इफेक्ट क्या है? the war. So cause and effect. Because of this, because the cause was not positive, the effect is the outcome is the war between the 2 countries, right? अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप रिसर्च अच्छा नहीं करोगे, that is cause, because आपको जरूरत है, आपको वो करना है. बट अगर आपने नहीं किया, what is the effect? Another example. What is the effect? You will not get salary. You will not be promoted. You will not get any grants by the funding agencies. Another example for the researcher from your community, like from your business. It's our business. I'm also in your same profession, right? Cause and effect. Third is correlation. X and Y can be interchanged. यहाँ पर हम correlation बदल देते हैं, क्योंकि Y भी वही होगा, X भी वही होगा. दोनों में change कर दिया तो भी value मुझे एक ही मिल रही है correlation. But regression में नहीं कर सकते. regression में अगर आप X को Y पर change करेंगे और Y को X पर change करेंगे, you will get the different line. ऐसा मत कीजिए. काफी लोग गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर कि सर उसमें होता है तो इसमें भी करने का कर सकते हैं, बट नियम आपको नहीं बोलता, लॉ नहीं बोलता है आपको स्टैट्स का. एक्स एंड वाई कैन नॉट बी इंटरचेंज. एक्स एक्स है, वाई वाई है. एक्स का वाई पर इम्पैक्ट देख रहे हैं लाइक कॉज एंड इफेक्ट, वो अलग आएगा. वाई का एक्स पर देख रहे हैं, वो अलग आएगा, राइट, बिकॉज लाइन्स आर डिफरेंट. and the correlation, that's why this chart is important. Fourth is data represented in a single point, क्योंकि यहाँ पर आपको data को represent करते हैं at one point, but in the case of regression data represented by the line. जैसे मैंने बताया, वो dotted line is going to and creating one small beautiful pattern, so I can say that it is a positive relationship. Maybe 1 or 2 points go here and there, but majority of the pattern, that's why I'm using the word pattern of the line. कुछ मैं charts भी लेके आया, आपको अच्छा लगेगा. Types of correlation: positive correlation, negative, perfect by positive, perfectly negative, zero correlation. ये तो आपके left side में है. Then right side, on the basis of number, simple correlation, partial correlation, multiple correlation. On the basis of proportion का, proportion मतलब उसका भाग, small proportion, the part that is known as proportion. Linear correlation, amount of change and constant ratio. Non-linear correlation is another way. So these are the different types. उनके प्रकार हैं correlation के. इसको और आप बेहतर समझ सकते हैं. इसका फोटो लेना चाहें आप ले सकते हैं.
Based on the direction of change of the variable, go for the positive correlation, negative. Based on the variables are studied, simple, multiple, partial. आपने नाम सुना होगा, partial correlation is quite famous. Then multiple, then simple correlation, right? Based upon the constancy of the ratio of the change between the variable, linear correlation and non-linear correlation. तो ये uses हैं कुछ. I think you know how it is being used for the research, driving the degree and direction. Degree, you know, the strength, the intensity. Intensity मैंने word लिखा नहीं है, but you can feel it what we are concerned with, right? So that is the degree. Okay. Correlation coefficient is always calculated by R, but this is for you. So these were the three patterns which I was mentioning. If R is negative -1, then there is a perfect negative correlation because पूरा ही नीचे जा रहा है. Perfect means एक सीधी line बना रहा है. Line R is close to 0, there is no correlation. कोई नहीं है, अलग अलग points से इनको मिलाना मुश्किल है. Zigzag बन जाएगा. Zigzag is not the correlation. ये तो वो हो जाएगा point between the two lines. Or you are 2 points are creating a line, that is also there, but it is not the one line where all the data set is in the same direction, right? Or if R is 1, then there is a perfect positive correlation that you can see it is creating towards the higher order. क्योंकि इसमें slope और intercept भी आ रहा है, तो आप देखेंगे slope and intercept is also changing. Right, so that's why it is known as correlation coefficient. और इसको हम बताते हैं measure of the strength and the direction of the linear relationship between the two values. इसको बोलते हैं correlation coefficient. Coefficient मतलब multiplying factor with respect to that. R represent the sample correlation coefficient. Rho represent the population correlation coefficient. Rho. Okay, so that is the way how you understand. ये कुछ और प्रकार हैं, आप देख लीजिए. बाकी तीन तो मैंने आपको बता दिया. ये नॉन लीनियर कोरिलेशन भी मैंने बता दिया. द कर्व इज लाइक दिस. ये आप देख रहे हैं, ये आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, दैट यू कैन सी. नो रिलेशनशिप. ओके, पॉजिटिव लीनियर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहे हैं नेगेटिव कोरिलेशन. इसको आप कभी भी मत भूलिए. डोंट फॉरगेट इट इवन इन योर ड्रीम्स आल्सो, बिकॉज इफ यू वांट टू एंजॉय द रिसर्च, you should live life in research. That is the one outcome. Non-linear correlation, देखिए non-linear correlation ऐसा कर्व बना रहा है, no correlation, कोई connection नहीं है, सब point scattered है और ज्यादा highly scattered है. एक word और मैं आपको दे रहा हूँ, highly scattered. So if you use these words, probably you are talking about sensibly about that area. Okay. So this is the regression. Regression is used when you predict the value of dependent variable. आपको अगर prediction value देनी है, कुछ बताना है कि इसका प्रभाव इस पर हुआ है, cause and effect, if you remember. So that's why prediction is important. Dependent variable, the variable we wish to explain. Independent variable, the variable used to explain the dependent variable. आ गई ना बात जो मैं आपको बता रहा था, cause and effect relationship. The variable we wish to explain, that is dependent. The independent, the variable used to explain the dependent variable. ठीक है, without which we can't explain. So regression is the equation of line y cap is equal to b naught plus bx. ये equation है, जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल्स में थे, आप और हम लोग जब स्कूल्स में थे, हमारे जो स्कूल टीचर्स ने बताया कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. आपको याद होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो दिस वाज द y एक्चुअली, द लाइन. बट जैसे हम हायर एजुकेशन में आए तो हमने देखा ये इक्वेशन है बट ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ एरर है. आप an error is denoted by epsilon, और उस एरर के लिए हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं. अदरवाइज वी कैन assume that your performance great or this session is great, but there is an error na. There could be other speaker also who can explain better than me, or who can explain me nearest to me, or who can explain not better than me, right? So life is like that. Maybe you find great presentation like this on YouTube or maybe other, right? But it is not there. I've never been in any competition, right? So y is equal to mx plus c plus epsilon. So that is important. अभी आएगा, हम बताएंगे आपको. Correlation and regression का थोड़ा further discussion है, उनका comparison chart है ये. So here you can see correlation between -1 and 1, but only the correlation coefficient can be greater than 1. और the value of the variable is known in this case, but उस केस में भी known है, but उसमें estimation variable की मालूम नहीं है correlation में, like this. So this is the basic file. यहाँ पर studied है, the nature of relationship is studied. वहाँ पर अब degree and direction of the relationship between the variables are studied in the correlation.
बट इसमें भी कोई कहीं कहीं मैंने कुछ लिटरेचर देखे हैं, कुछ पार्ट रिग्रेशन में भी आ जाता है कोरिलेशन, बिकॉज रिग्रेशन इज नॉट, आई शुड से, अवे फ्रॉम द कोरिलेशन, राइट? दैट इज ऑल्सो अनदर वे. So regression coefficient is independent of change of origin but not of the scale. So correlation is definitely there. So this chart will probably help you degree and nature of the relationship, cause and effect of the relationship, prediction and nonsense correlation. Nonsense is also the word, guy. आप रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे लाइफ यू से दैट नॉनसेंस पीपल, सो नॉनसेंस इज ए categorical variable in the you know in the research of, or you can say in the research fraternity, right? Nonsense correlation मतलब कोई सेंस नहीं है उसका रिलेशन का. Correlation तो बट nonsense. So in correlation analysis sometimes there is no sense correlation like between rise in income and rise in income. अब वेट का इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है ना, आप देखेंगे, है ना? अब वेट किसी का बढ़ रहा है तो उसकी इनकम बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का या किसी रिसर्चर का वेट बढ़ रहा है, वेट मीन्स मास, मीन्स हिज मास और हर मास, तो इट हैज नथिंग टू डू द इनकम ना, तो इट इज अ नॉनसेंस कोरिलेशन. बट रिग्रेशन में आप देखेंगे देयर इज ए नथिंग लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन, बट कोरिलेशन तो है बट रिग्रेशन नहीं है, right? So that these are some you can say unhidden or sorry untapped information or hidden information, not unhidden, it is hidden information. So this chart will help you guys. ये चार्ट का फोटो आप ले सकते हैं. कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन विद द स्ट्रेट लाइन, द पॉजिटिव वन. द पर्पस इज प्रिडिक्शन, डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, और correlation को description and inference. So guys, give me some 2-3 minutes more to wind up this. I'm sure the time is there and you are waiting for the valedictory and all. Okay, so statistics used are, but in linear regression r square, adjusted r square आपने सुना होगा, लोग इसकी वैल्यू देखते हैं. In finance, suppose you are finance, adjusted r square nearest to 0.3 and r square maybe 0.34. but दूसरे केसेस में अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इफ यू गो इन डिफरेंट एरियाज, द गुड आर स्क्वायर इज 7.7 मे बी, राइट? सो दीज आर सम वैल्यूज, कुछ दिया है लोगों ने. Variables paired 2, 3 and more. Variables in no differentiation between the variable, in this case one or more dependent variables. Fits a line through the data. Implicity in the correlation, but linear regression explicitly, that is सेम इक्वेशन ऑफ लाइन. रिग्रेशन आप समझ लीजिए, लाइन आपको बनानी है, आपको अपने वेरिएबल्स निकालने हैं. अभी मैनुअल करेंगे, इट्स वेरी, आई थिंक आई नीड 3-4 आवर डिस्कशन अबाउट लाइन, वो भी है मेरे पास, बिकॉज आई यूज्ड डिफरेंट एज पर द इंस्टीट्यूट वांट्स, बीइंग ए ट्रेनर इन दिस एरिया. सो वो 4 घंटे का पूरा 5 घंटे का डिस्कशन है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं SST, SSR, SSE, like this, उसका कनेक्शन है, राइट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप does not address in correlation, but इसमें थोड़ा शो करते हैं, attempts to show, to represent. That is linear regression is a line. लाइन से हमें पता लग जाता है हमारा जो रिलेशनशिप है इस पूरे रिसर्च का किस तरफ है, कर्वी लीनियर है, कुछ कनेक्शन है, बिकॉज ग्राफ्स आर ऑलवेज better representing techniques with this. So regression है, ये कुछ variables है, you define the objective, select the variable, regression model बनाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा model is nothing but a situation. आजकल तो रिसर्च बहुत आगे चला गया, ABDC and Scopus papers are looking for models. वो सिंपल बात को नहीं सुनना चाहते. So you have to estimate these models. Different model बनाइए, उनकी टेस्टिंग कीजिए. मॉडल में सिचुएशन बनाइए रिलेटेड टू योर, कि एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकता है, फिर आप उसको रिग्रेशन लगाइए उन मॉडल्स में, और डेटा वही रहेगा बट आपके सिचुएशन बदल जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट इस पर है, इसका इम्पैक्ट इस पर है. तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में हम लोग PLS, लीस्ट स्क्वायर मेथड्स वगैरह यूज करते हैं, एस्टिमेशन मॉडल, टेस्ट द मॉडल, इंप्लीमेंट एंड यूज एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस. सो इन दिस सेक्टर रिग्रेशन, the research is more demanding actually, and it is happening actually, demanding also as well as it is happening also. अगर आपने मॉडल नहीं बनाया है और रिग्रेशन नहीं किया है, nobody will accept your paper in today's time, maybe because everybody want to be a complex analysis, complex चाहिए उनको, right? So regression है, dependent variable is y, x is independent variable. तो यहाँ पर आप कुछ देख लीजिए, कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं. हीटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू A plus B, that is the home size. Miles per gallon is A plus B, the car weight.
So y is a dependent variable. It is the variable being predicted or estimated. X is the independent variable. For regression equation, it is the variable to use the estimate the dependent variable. जो dependent variable के estimate को पता करेगा उसको हम बोलते हैं x. So y and x is the predictor variable. इसलिए इसको हम predict. So x is the predictor variable. Predict करेगा, right? So in this way. So constant term है y is equal to, देखिए error term आ गया, random error term. So y is the dependent variable. Independent variables are x1 and x2. b naught is the constant term because आप कोई constant बनाएंगे उसके reference में आपकी line आएगी. So b naught is the constant term. Coefficients are b1. Coefficients are nothing but a multiplier of your variable. iv independent variable का जो multiplier है उनको हम coefficients बोलते हैं. And इसकी ये series होती है. It depends. So that's why y is equal to mx plus e plus epsilon plus minus. But we consider plus और minus also. So epsilon को हम e से दिखाते हैं. E nothing but a error. ओके सो इतना आपको याद रखना है. इट इज़ वेरी इजी. यहाँ पर आप देख लीजिए एरर टर्म एप्सिलॉन आ गया आपके सामने और ये देखिए एक छोटा सा आपके सामने एक रिजल्ट है, चार्ट है उस कंडीशन का. तो कुछ पॉइंट्स मीट कर रहे हैं. अगर आप इसका पूरा पैटर्न देखेंगे इट इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो यहाँ आप जान सकते हैं बीटा नॉट इज द पॉपुलेशन इंटरसेप्ट, बीटा वन इज द पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट, राइट. और dependent variable is yi, that is response. Independent variable is xi, which is predictor. Epsilon I is the random error. कितना एरर है? एरर जितना कम होगा उतना आपका रिसर्च अच्छा होगा. बट कोई भी हिंदुस्तान में, पूरे कहीं विदेशों में, देश में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी संसार में, इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है. So that's why it is an analogy that there is a scope of improvement. I'm sure you have heard the one term 6 sigma. Now the people have moved to the 8 sigma. 99.999999 some gap is coming after 12th decimal places, 16th decimal places. So that is the, where we talk about the improvement of the quality, improvement of anything. Like so interpreting a regression line ये थोड़ा हमने बता रखा है. तो जैसे आपकी वैल्यू आएगी, सपोज ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू तो आपका है क्योंकि ये आपका कोर वैल्यू है बीटा नॉट, right, minus some value of x1 or x2. So that is slope, so which tells you that how much kilogram is added to calorie of some variable. तो यहाँ पर नेगेटिव आया रिजल्ट. अगर आप देखेंगे पैटर्न इज गोइंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, then we can say this. So slope and intercept का relation है, so that is regression. इसको interpret कर सकते हैं with negative sign, positive, and so that is the regression equation is concerned with. बाकी multiple regression है because here you are dealing with the multiple variables like multivariate data analysis, right? क्योंकि आप एक दो वेरिएबल तो नहीं ले रहे, मल्टीपल ले रहे, बहुत सारे ले रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x5 etc. like xki is the last one, okay. So we assume that way. So I think इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा. देखिए मल्टीपल रिग्रेशन का, तो ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न है, तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम में बता सकते हैं कि $6.10 per month is the increase cost as far as this is. So some results are well interpreted with. तो पहले आपका इक्वेशन आएगा x का, then y आएगा. So with these words guys, I'm done with the presentation. I hope you had a good learning with respect to non-parametric test and correlation regression. So if you have any queries and specific questions, I'm open for the answer. So thank you very much guys once again. So let me go back to the main screen. Sir, can you tell me a good statistic book? Yes, very good question. Thank you for reminding. I'm showing you. Yeah, let me reshare the screen. Yes. This. So let me. दिस इज द गुड बुक गाइस, ये आपको मिल जाएगा. दिस इज विच आई लाइक द मोस्ट. वैसे काफ़ी है मेरे पास है, काफ़ी बुक्स है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो हियर इज नथिंग लाइक आई एम प्रमोटिंग, बट आई लाइक द कंटेंट. तो इसका जो ये देखिए आपको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए. एंडरसन, स्विनी, विलियम्स, कैमरॉन एंड कॉकरन.
and I think it cost around 800 plus rupees. अगर आप अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं, सीखना, ये टेबल वैल्यूज है, देखिए जेड की टेबल वैल्यूज जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें दे रखी हैं ये सारी चीजें। ये एरिया अंडर द कर्व है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये सब आपका वहां पर सॉफ्टवेयर में ऑटोमाइज्ड है। सो दिस आई लाइक दिस मोस्ट, और इसमें काफी कुछ अच्छा दे रखा है। देखिए जो मैंने बताया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन 600 पेज पर है, मल्टीपल रिग्रेशन, सब कुछ सीक्वेंस में। अगर आपने ये बुक ले ली, I can guarantee that you will do the fantastic research as far as the statistics is concerned. क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस भी दे रखे हैं, एक्सेल एक्सरसाइज भी दे रखी है, देखिए टूल्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बाकी क्या है ना, अगर आप अलग अलग बुक यूज करने का नुकसान क्या है कि आप नोटेशंस बदल देते हैं। तो आई वुड एडवाइज यू यू यूज 1 or 2 बुक्स, नॉट मैनी। और ये बुक मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि इन ऑथर्स ने क्या किया है कि इन्होंने सीक्वेंस में बताया कि डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, या प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपोथेसिस टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे एक सीक्वेंस में दिया, इवन टाइम सीरीज एनालिसिस, फोरकास्टिंग क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस, अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, मॉडल बिल्डिंग अभी बात की थी ना हमने, तो देखिए मॉडल बिल्डिंग का Yes, चैप्टर sir. नंबर 16 है। सो एक आपके पास एक ऐसा बुक है जो आपको 80 to 90% इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है, इसके बहुत न्यूमेरिकल अच्छे हैं, केस स्टडीज भी आपको मिल जाएंगे, तो एक आप अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज फॉर दिस। आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड द क्वेरी। Yes, yes, sir. And thank you very much, sir. It was very informative session. ओके, थैंक यू, ऑल प्लेजर इज माइन। सत्यजीत जी, हेलो डॉक्टर सत्यजीत। Thank you, sir. Thank you, sir. And many thanks for the book, the information regarding the book. I have the soft copy of the older edition. If someone want, I'm happy to share with you. Not an issue. Yes, sir. We need that book. Yeah, but it is a older one. Okay. Older version means many things have been Please updated. share, sir. Yeah. I would like to express our deep thanks on behalf of Birla Institute of Technology off-campus Lalpur to our guest, Dr. Rudra Rameswar sir, for such an amazing and informative presentation and giving us an insight on the relevant topic. I also extend my gratitude to Dr. Vandana Bhattacharjee ma'am, director of our center, for providing us for such a platform. My sincere thanks is directed to Dr. Satyajit sir and Satyajit Chaudhary sir and Dr. Syed Anis Haider sir, who took effort to organize this event. Special acknowledgement is to all the faculty members for joining this session and making this a great success. I also thank the committee members who contributed in the event. I would also like to express a gratefulness to all the attendees for taking out time and supporting us in our endeavor. We look forward to conduct more such events hereafter and hope sir will join us in future too. There's a special announcement. Certificate for the session will be distributed after 5 or 6 days. Thank you. So, respected Director, Madam, our guest speaker, Dr. Rudra sir, my faculty members and participants, good afternoon to all of you. It was wonderful session of 5 days research methodology basic programs. So I hope that all the participants will get a lot of benefits. We had learned so many tools and techniques and research methodology, the different factors and everything.
So I hope that all the participants will learn the so many things, right? And may I request to the director, madam, to share the valuable insights, 5 days FDP programs. So I'm going to hand over to the director, ma'am. So please, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Dr. Heather, and good afternoon and namaskar, Professor Rudra Ravishwar Good sir. afternoon, ma'am. Good Namaskar, afternoon, sir. ma'am. Namaskar, sir. Good to see you. Yeah. Yeah, same here, sir. This was a very happening week for our campus. Starting from Monday, we have had 5 days of elaborate sessions on research methodology basics. We have had great speakers from IIT Kharagpur, yourself, sir, from Thapar University, Thapar Institute of Technology. And then we have also had people from our own campus who share their views. Then Amity University. So it was, there are so many things in research. We all, for us, it is a compulsion, not only for promotions or for upgradation, but for our own internal satisfaction. That is the most important thing. People say, "Ah, professor ho gaye," but there is a child in everybody. Also in professor or vice chancellor, I am very sure, because our vice chancellor is also very, very learned person. So that component needs to be fed. So we I have tried to listen to some sessions, not all of them, but all were very insightful and treading us more towards research, doing more whatever we are doing in our fields. So I thank all the speakers, all the participants, attendees from all over the country. And yourself, sir, you have spared time for our participant for our campus, which Yeah. is a Thank you big very much. thing. Thank And you we very would much. definitely want you to come here. Sure, sure, definitely. After. I love to come and see your campus. Yeah. Sure, sir. So For we'll for for some probably other topics assignment. also. Yeah. Yes, and Assignments. maybe, Yeah. sir, as a PhD examiner. I have visited Thapar once in Okay. Very good. 2018. Yes, sir, Okay. That's communications. good. Okay. Yes, sir. So that would be a very nice interaction again. Yeah. And thanks very much to my convener and co-convener, Dr. Sachidhi Chaudhary and Dr. Heather. You put in lot of efforts, even though we were slightly short of time due to the some processes, Thank you, ma'am. and all the attendees. So it was a great learning and enlightening experience for us. Rejuvenating also, because now we prepare for the next semester, which will start in July end or August. So this time we can use for whatever we have learned from here, and wait for the next session, which you would be next edition of this workshop. As you have promised me, you will be doing it. So, okay, sir. Sir is has shared a message. Please, everybody, you stay in touch with sir, and it would be very good for all of us. Thanks, everybody. Thank you very much. Thanks, sir. Thank you, madam. Thank you, Thank you, sir. madam. Thank you. Thank you, sir. So we close the session. Uh, Are we? just a Thanksgiving, madam. How about Just a of thanks? हाँ जी हाँ. Yes. दीजिए हाँ.
Thank you, madam. Thank you for your support. Thank you, ma'am. Many thanks. Thank you, ma'am. That you trust us. Okay. Thanks Thank for you, your sir. trust and encouragement. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And Thank you, thank you sir. for Thank you, sir. listening. Thank you, ma'am. Namaskar, sir. Okay.